From the gullies of Lucknow to the ghats of Varanasi, Uttar Pradesh is a state with many faces and dimensions. Of the state population, 70% live in rural areas. But in recent years, Indian villages have been quickly transforming into urban spaces. This rapid urbanization has been a major challenge for Uttar Pradesh, especially when it comes to wastewater and septage management. Over the past few decades, the health of River Ganga had been substantially affected by the mixing of sewage and household septic waste via open drains ending into the river. But today, a small town located in the Mirzapur district on the banks of Ganga and Jargo is showing Uttar Pradesh how to efficiently manage its septage waste while also questioning its inclusive wastewater management journey. Only 20% of the urban areas in the state are serviced by sewage systems. And when it comes to informal settlements and rural areas, there were no proper waste management systems in place. Without proper systems, the drains were mixed with septage waste and constantly ended up in large water bodies. Experts link pollution in the Ganga and other rivers to India's high rate of waterborne diseases, which kill an estimated 1.5 million children every year in the country. उसमें क्या होता है कि मेनली बीओडी जो घरेलू घरों के डोमेस्टिक का सीवर होता है, उसमें लगभग बीओडी 150 से 150 से 200 होता है. इसी तरह सीओडी चूँकि केमिकल वेस्ट होता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में होता है. सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फीकल कोलिफॉर्म लगभग 2 लाख के आसपास वहाँ पाए गए जो कि रिवर बॉडी में मिल रहे थे. उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. For a steadily growing town like Chunar, the concept of collecting and disposing of septage was a new challenge. The non-sewage sanitation model was an ideal situation. In 2017, the state government decided to take a fecal sludge treatment plant pilot project in Chunar with 10 KLD capacity with the help of National Mission for Clean Ganga. ये बहुत जगह पे हमारी आबादी एक्सटेंडेड हो रही है और उस विस्तारित क्षेत्र में अगला चरण ये आ रहा है कि कैसे उस जो भी सीवेज उत्पन्न होगा उसको ट्रीट कैसे किया जाए. चुनार भी उसका एक एग्जाम्पल था. भारतवर्ष में पहला था जिसमें एनएमसीजी ने चुनार के लिए फंडिंग की और ये गंगा किनारे का शहर है. योजना के चरण में ये विकल्प सामने आया कि एफएसटीपी के माध्यम से, चूँकि वहाँ पे कुल हम लोग का क्षमता 42,000 लोग ही थे, तो एसटीपी तो उसका विकल्प हो नहीं सकता था. 10 KLD क्षमता के एफएसटीपी का हम लोगों ने वहाँ पे निर्माण कराया. In 2017, the local government, with the help of Center for Science and Environment, started reaching out to people and started conducting IEC activities to make sure people are sensitized to the importance of collecting and disposing of septage waste properly. They also provided financial aid for the installation of septic tanks in households. Inclusivity was key to the mission. The local government emphasized on bringing urban poor living in informal settlements under the umbrella of waste management, as they realized that even one single broken chain can disrupt the entire system. लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग मोहल्ले में जा कर के ये बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से लोगों को समझाया कि भाई ये मल हमारा यदि नाली में जाएगा, नाली से गंगा जी में जाएगा, गंगा जी में हम जा कर के नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये गंदगी होती है. और उसके बाद लोगों को आईसी के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया और काफ़ी लोग जुड़े. After 5 years of hard work, the Chunar fecal sludge treatment plant was commissioned in September 2022. This marked a new era of systematic septage management in the district. Today, people have the option to call the municipality and request for septic tank cleaning
at a marginal cost of 500 rupees per household. The local authorities have also decided to undertake the cleaning of tanks in informal settlements free of cost. But the question arises, how has this initiative impacted Chunar, the people of Chunar and the river Ganga? पहले तो इस तरह जो टंकी भर जाती थी तो किसी को मिला के जो स्वीपर होते थे उनसे मिला के जो है वो बाल्टी से इस तरह ठेले से ले आकर फेंकते थे और तमाम गंदगी हो जाती थी और उस पर तमाम बीमारियां भी फैल रही थी। और अब क्या हुआ है, जो वहाँ पर टैंक बना हुआ है प्लांट, वो आपके नगर पालिका से टैंक उगाती है, उनके कर्मचारी आते हैं और उसको कायदे सफाई करते हैं, कोई गंदगी भी नहीं होती है, फिर उसको जाकर प्लांट में डाल देते हैं। पहले से बहुत फ़र्क है। The fully functioning FSTP is in its early stages in Chunar, but still it has managed to have positive impact on the town. The health and hygiene of the town has improved drastically. By 2022, 51% of fecal sludge and septage were being safely managed, compared to 0% in 2017. अभी के लिए प्लांट तैयार है और आगे में हम लोग ये सोच रहे हैं इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए और इंक्लूसिवनेस के लिए शेड्यूल डिस्लेजिंग होनी चाहिए, जिसमें हर 3 साल पे प्रत्येक घर का सेप्टिक टैंक खाली होगा और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और इकोनॉमिक्स की बात देखें तो इस जो सुविधा है डिस्लेजिंग की सुविधा, सभी सेप्टिक टैंक खाली करने की सुविधा, तो ये हम सभी तबके के लोगों को जो सेम बराबर से एक सुविधा देना चाहते हैं। For Uttar Pradesh, this is just the beginning. There are 62 FSTP and co-treatment plants under construction in 59 cities. They are also shifting their focus on STPs and co-treatment plants in the state as well. Even though Chunar is a role model to follow, much work still needs to be done to truly achieve a sustainable and inclusive sanitation in the state.